Very good evening to all of you. This audible, visible, all clear? सब ठीक अच्छी? All clear? Focus. Okay. All right. But just 1 minute. Last class रे कौन पढ़ुଥିଲେ हमें?
हो तो ठीक अच्छे तो स्टार्ट करबा आमे आज टॉपिक ऑफ डिस्कशन अच्छी कौन ना इन्फ्लेशन टॉपिक ऑफ डिस्कशन अच्छी इन्फ्लेशन एंड बिजनेस साइकिल मु आसीबी ता पूर्व इन्फ्लेशन नो ट्रेंड वर्तमान कौन चली इंडिया रे एटा यूनियन बजेट रो डाटा मु दउची एई वर्षर यूनियन बजेट डाटा दउची एवरीवन क्लियर रूपश्री गिरिजा वर्षा अंजू ऑल क्लियर समस्त को तो आज टॉपिक ऑफ डिस्कशन स्टार्ट करिया पूर्व मु कौन कहली ना एई वर्षर किछि डाटा दउची समस्त एटी देखंतु India recorded its lowest CPI inflation. The Union budget data. Budget 26-27 रो डाटा ये कुछ CPI inflation since the series began with April to December 2025 average inflation कितना 1.7 देख पर समय average inflation rate कितने अच्छी ना only 1.7 कितने इटा average inflation rate अच्छी only 1.7 inflation moderation it was driven mainly by decreasing food and fuel price এটা কেতে from 52.7% from market CPI basket ये गला दि तीनटा इंपोर्टेंट डाटा आको पढिबे समझ ताले एबे आसीबा पुनी आसीबे सेम डाटा को मु आसीबी आउ थरे आसीबी ता पूर्वरु आमे बुझिबा इन्फ्लेशन कहले कोन बुझे व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इन्फ्लेशन ता पूर्वरु आमे देखिबा व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इन्फ्लेशन इन्फ्लेशन नो डेफिनेशन कोन डेफिनेशन कहले इन्फ्लेशन कहले आमे कोन बुझे की कहबे प्राइस हाइक टा को आमे कहूचे इन्फ्लेशन कोन कहली प्राइस हाइक टा को आमे कहूचे इन्फ्लेशन अनसस्टेनेबल प्राइस हाइक सो कौन देखो इट इज अ चैलेंज फॉर पॉलिसी मेकर्स पॉलिटिशियंस कॉमन पीपल सो इन्फ्लेशन इज ऑफन हैड एंड सीन इन मीडिया इट इज अ प्रॉब्लम फॉर एवरीवन फॉर एवरी कॉमन मैन दिस इज अ प्रॉब्लम this is a problem for every common man so inflation is defined as sustained increase in general level of price inflation कौन inflation is increase in general level of price general price level टा increase करियो को हमें कहूचे inflation बोली हां कि नहीं ताले मते कोन लेट्स से गोटे प्रोडक्ट रो वैल्यू थिला 2000 मसिया रे गोटे प्रोडक्ट रो वैल्यू थिला लेट्स से 10 टंका 2025 रे हमें देखुचे से बढ़ी के 10 टंका 50 पैसा ताले मु कहबी इज दिस इन्फ्लेशन 10 टंका थिला वैल्यू 2000 मसिया रे 2025 रे एटा बढ़ी के केते ना 10 टंका 50 पैसा सो कैन आई कॉल इट एज इन्फ्लेशन एटा को इन्फ्लेशन कहि परिबी कि कैन आई कॉल इट एज इन्फ्लेशन आ को इन्फ्लेशन कहि परिबी कि एटा को इन्फ्लेशन कहि परिबे कि न ये जति की बढ़ी ची ये बढ़िया भी दरकार जेतले प्राइस इंक्रीज हुए जेतले प्राइस इंक्रीज हुए now it is increase हेले कहा पाई प्रॉब्लम ना दिस इज अ प्रॉब्लम फॉर कंज्यूमर जेतले प्राइस डिक्रीज होउची इन द सेम वे जेतले प्राइस डिक्रीज होउची कहा पाई ये प्रॉब्लम ना इट इज अ प्रॉब्लम फॉर द सप्लायर जे सप्लाई करूची बा द प्रोड्यूसर प्राइस कमी गले भी प्रोड्यूसर पाई प्रॉब्लम देखिए बेले बेले टमाटो प्राइस कमी की 50 पैसा टंका टा हो जाए पर केजी टमाटो प्राइस डिक्रीज है कि 50 पैसा टंका टा हो पर केजी टमाटो प्राइस जो डिक्रीज हो जाउची दिस इज अ प्रॉब्लम फॉर द प्रोड्यूसर ता प्रोड्यूस ही करिवनी बुझियो कि नहीं पियो पियो बुझियो कि नहीं तुम पढ़ेला बेलू मतलब तुम ना नौ सेपटे मो झील पलि आस दौड़ी शुणी बुझीपार कि पिहू डाकिले 2-4 थर पिहू पिहू कहले ता ना भी पिहू से सब आंटी आंटी पलि आस एनीवे सो सप्लायर प्राइस जदि कमी जाए कौन कहली प्राइस जदि कमी जाए दिस विल बी अ प्रॉब्लम कहा पे ना दिस विल बी प्रॉब्लम फॉर द प्रोड्यूसर प्राइस जदि कमी जाए इट विल बी अ प्रॉब्लम फॉर द प्रोड्यूसर now प्राइस जदि बढ़ी जाए इट विल प्रॉब्लम फॉर द कंज्यूमर प्राइस बढ़िला हमें कहबे अरे असुविधा हो गला कंज्यूमर कहबो कि मार्केट जाइतली किनिया पई माछ किनिया पई चिकन किनिया पई प्राइस बढ़ुची अननेसेसरली प्राइस इंक्रीज हो जाउची
सो प्रोड्यूसर पे प्रॉब्लम ही पर बुझिला सो देखले गोटे सप्लायर पई आ गोटे देखले आमे कंज्यूमर पई प्रॉब्लम पर तो प्राइस इंक्रीज होची कहा पई प्रॉब्लम और डिक्रीज होची कहा पई प्रॉब्लम सो एठी देखुचे कोन ना 10 टंका थिला 10 टंका रो एटा कोन हला 10 टंका रो कि 10 टंका 50 हला सो एटा टेक्निकली देखले दिस इज इन्फ्लेशन बट दिस इज नॉट इन्फ्लेशन बट एटा इन्फ्लेशन नुहे काहे की इन्फ्लेशन is a minimum rise there is minimum rise in price there is minimum rise in price so percentage change in price over particular time period केते परसेंट चेंज हेची ना 10% भी होनी 5% चेंज हेची प्राइस केते वर्ष रे 5% चेंज इन प्राइस 5% चेंज इन 25 इयर्स केते 5% चेंज केते दिन रे ना 5% चेंज हेची इन 25 इयर्स so we cannot say this as a very high inflation कहिबी inflation different types कहिबी now what are the causes of inflation now first is a demand side inflation बा डिमांड पुल इन्फ्लेशन एटा केते बेले होची एतो डिमांड अधिक से अनुसार सप्लाई होनी कोन कहली जेते डिमांड होची तो डिमांड बढ़ुची बट से अनुसार सप्लाई होनी ता कहते हम डिमांड साइड इन्फ्लेशन कोन कहली डिमांड साइड कोन डिमांड इंक्रीज होची डिमांड अनुसार सप्लाई होनी no supply as per demand no supply as per demand ता कोन कहले दैट इज कॉल्ड डिमांड पुल इन्फ्लेशन एटा केते बेले होची ना व्हेन द इकोनॉमी इज ग्रोइंग एट अ फास्टर रेट व्हेन इकोनॉमी ग्रो जेतो इकोनॉमी ग्रो करूची एट अ फास्टर रेट व्हेन द इकोनॉमी ग्रोज एट अ फास्टर रेट से समय होची कोन ना डिमांड पुल इन्फ्लेशन बुझला डिमांड बढ़ी गला तर मार्केट रे डिमांड अछि 200 केजी अंगूर पई 200 केजी अंगूर पई मार्केट रे डिमांड अछि आसिला केते ना 100 केजी सो ऑब्वियसली डिमांड अछि एटा नाही तुमरो डिमांड अनुसार सप्लाई नाही कोन कहले डिमांड अछि डिमांड अनुसार सप्लाई नाही सो डिमांड पुल इन्फ्लेशन हुए कोन ना देयर इज ग्रोथ इन पॉपुलेशन एंड इंक्रीज इन डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज कोन होची ठी ना ग्रोथ होची पॉपुलेशन ग्रोथ होची देयर इज ग्रोथ इन पॉपुलेशन ग्रोथ होची एंड इंक्रीज इन डिमांड for goods and services increase in demand कौन पाई ना increase in demand for goods and services population बढ़िले मते कुओ डिमांड बढ़िबो ना कमिबो population बढ़िले मते डिमांड को मते को डिमांड बढ़िबो ना कमिबो population बढ़िले कोन हबो डिमांड बढ़िबो population बढ़िला so gradually demand will increase कौन कहली population बढ़िले gradually demand मध्यम बढ़िबो there is increase in income level and purchasing power of household now income बढ़िले purchasing power मध्यम बढ़िबो yes भी बढ़िबो income बढ़िले कोन बना income बढ़िले purchasing power टा भी बढ़िबो कोन income थिला जनकर 20000 से वेजिटेबल्स खाउतला income बढ़ी के गला 50000 से कोन खाइबो ना फ्रूट्स खाइबो कोन खाइबो से फ्रूट्स खाइबो ना 50000 पर लाख टंका हे गला से एक्सोटिक फ्रूट्स इंपोर्टेड फ्रूट्स खाइबो ना इटा इंक्रीज करूची दिस इज ग्रेजुअली इंक्रीजिंग डिपेंडिंग ऑन व्हाट डिपेंडिंग ऑन कहा पर डिपेंडिंग ऑन द इनकम लेवल एंड आल्सो चेंजिंग बायर्स बिहेवियर इज इंपोर्टेंट चेंजिंग बायर्स बिहेवियर कोन हमर पूर्वरु कोन खाउतले संध्या बेले स्नैक्स कोन खाउतले छोट बेले पूर्व बा हमर गोटे पुरुष पूर्वरु लास्ट जनरेशन कोन बापांग जनरेशन कोन खाउतले ता पूर्व जनरेशन कोन जेजेबापांग जनरेशन कोन खाउतला ता पूर्व जनरेशन अणजेजेंग जनरेशन कोन खाउतला बहुत दिन तळो देखियो खुद भजा नाली चा खाउतले संध्या बेले ग्रेजुअली सेटा मुड़ी चूड़ा को चेंज हेगला जेतले अवेलेबल हैला चूड़ा मुड़ी बिस्कुट मिक्सचर तापर बिस्कुट मिक्सचर आसला तापर पकुड़ी बरा पियाज सिंगड़ा आसला एबे सब चेंज हे कोन जोटा पंचभूत कहै दतला पंचभूतर डेफिनेशन चेंज हेगला गुपचुप चाट पिज्जा बर्गर पास्ता चाउमीन ये सब आसी गलानी नुवा जिंस हैला सो एटा टाइम अनुसार बायर्स बिहेवियर चेंज होउछ हां कि नहीं टाइम अनुसार बायर्स बिहेवियर चेंज होउछ कि नहीं तो बायर्स बिहेवियर चेंज होउची दैट आल्सो लीड्स टू इन्फ्लेशन
कहीं डिमांड बढ़ुची बायर्स बिहेवियर चेंज होवार अर्थ देयर इज इंक्रीजिंग इन डिमांड कौन कहली देयर इज इंक्रीजिंग इन डिमांड डिमांड एठी बढ़ुची इंक्रीज इन लिक्विडिटी इन द इकोनॉमी लिक्विडिटी अर्थ अमाउंट ऑफ मनी हाँ कि नहीं बिरियानी पिज्जा ना बेसी सियाड़ को जाने पुणी खाइबा आड़ को मन पड़ेगा पाटरे इच्छा मन लगे खाइबा आड़ को मन पड़ेगा पाटरे मन लगे हाँ क्लास सरी जाओ तापर जहाँ खाइबा कथा खाइबो The demand बढ़ू changing buyers behavior increasing liquidity means amount of money in the market amount of money in market बुझेला कौन कहली लिक्विडिटी अर्थ है अमाउंट ऑफ मनी इन द मार्केट ताल देखो एई चारिटा कंडीशन आसिले कौन होची ना एई चारिटा कंडीशन क्रिएट हेले इन्फ्लेशन क्रिएट होची इज दिस क्लियर ये चारिटा कंडीशन क्रिएट हेले मार्केट रे इन्फ्लेशन होची को टाइप रो इन्फ्लेशन ना डिमांड पुल इन्फ्लेशन डिमांड पुल माने डिमांड बढ़ुची डिमांड इंक्रीज होची डिमांड अनुसार सप्लाई नाही एंड एवं डिमांड अनुसार हमें कौन देखुचे डिमांड अनुसार सप्लाई नाही बुझेगला ताल डिमांड पुल कौन now demand pool ro impact kono what are the macroeconomic impact of demand pool inflation no macroeconomic impact kono मत को डिमांड बढ़िले सप्लाई बढ़िबो कि नहीं सप्लाई बढ़िले प्रोडक्शन बढ़िबो कि नहीं सप्लाई बढ़िले प्रोडक्शन बढ़िबो कि नहीं यस कौन सप्लाई बढ़िले प्रोडक्शन बढ़िबो यस प्रोडक्शन बढ़िबो यदि प्रोडक्शन बढ़े ताले एम्प्लॉयमेंट कौन हम प्रोडक्शन बढ़िले एम्प्लॉयमेंट कौन हम बढ़िबो ना कमिबो रे ना एम्प्लॉयमेंट कमिबो सो एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज देयर इज राइज इन रियल जीडीपी यस रियल जीडीपी इंक्रीज करियो हां कि नहीं एम्प्लॉयमेंट बढ़िले अनएम्प्लॉयमेंट रेट टा कमिबो ना बढ़िबो एम्प्लॉयमेंट बढ़िले अनएम्प्लॉयमेंट रेट टा कोन ना देयर विल फॉल इन अनएम्प्लॉयमेंट रेट यस वेज रिवीजन कोन हो देयर विल बी अपवर्ड रिवीजन ऑफ वेज कोन बोल देयर विल बी अपवर्ड रिवीजन ऑफ वेज बढ़िबो एना डिमांड फॉर वर्कर्स बढ़िले वेज मध्य बढ़े कोन बोले डिमांड फॉर वर्कर्स बढ़िले वेज मध्य बढ़े बुझिला नेक्स्ट ये गला डिमांड साइड कथा नाउ द सप्लाई साइड रे देखुचे हम कोन ना कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन आटारे टमाटर कोड़ी रह गलानी ओके ठीक है सप्लाई साइड डिमांड साइड देखिले हमें सप्लाई साइड नो सप्लाई साइड कोन मते को फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हमें केतरा पडिथिले हाउ मेनी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर देयर how many factors of production there are 4 factors of production land labor capital and entrepreneur land labor capital and entrepreneur there are 4 factors of production now जदि ए factors of production गुडा को increase करि जानती कोन को जदि ये factors of production गुडा को increase करि जानती ताले कोन हबो there will be cost push inflation माने प्राइस बढ़िबो कि नहीं लैंड कॉस्ट बढ़िला देखो सेम बरा सिंगडा बिक्री करथियो गोटे लोक 2 टंगा रे कटक रे सेटा 5 टंगा भुवनेश्वर रे 7 टंगा दिल्ली बॉम्बे गले 15 टंका कहीं बिकज लैंड कॉस्ट अधिक दवा पड़े रेंट अधिक दवा पड़े रेंट बढ़िले प्रोडक्ट रो प्राइस बढ़ी जीवो हां कि नहीं रेंट बढ़िले प्रोडक्ट रो प्राइस बढ़िबो कि बढ़िबो ना एब्सोल्युटली बढ़िबो एब्सोल्युटली इंक्रीज ऑफ प्रोडक्ट प्राइस बुझिला सो लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रेन्योर कॉस्ट बढ़िले एटा मध्ये बढ़ी जीवो एटा मध्ये एटी इंक्रीज हे तो फैक्टर कॉस्ट इंक्रीज हेले कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़िला एंड इन्फ्लेशन हबो कोन बोल फैक्टर कॉस्ट बढ़िले कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़िला एवं सेति पई कोन हबो ना इन्फ्लेशन हबो ताको कहआ जाय सप्लाई साइड इन्फ्लेशन कोन को दैट इज कॉल्ड सप्लाई साइड इन्फ्लेशन नाउ macroeconomic impact कोन सप्लाई साइड इन्फ्लेशन नो macroeconomic impact कोन
एटा टेम्पररी ना फुल टाइम ना दिस इज टेम्पररी इन नेचर कौन एटा टेम्पररी ना फुल टाइम ना यस इट इज टेम्पररी इन नेचर it leads to lower economic growth or not yes economic growth एटी कमी जीवो causes higher price level कि नहीं yes price level बढ़ी जीवो real gdp कमियो कि नहीं कमी जीवो ना मत को ए जगह रे प्रोडक्शन अधिक हबो ना प्रोडक्शन कम हबो सप्लाई साइड रे प्रोडक्शन अधिक हबो ना प्रोडक्शन कम हबो कौन बोल सप्लाई साइड रे प्रोडक्शन अधिक हबो ना प्रोडक्शन कम हबो फटाफट को सप्लाई साइड रे मोर प्रोडक्शन और लेस प्रोडक्शन ना प्रोडक्शन कमी जीवो ना एठी सेठी डिमांड अधिक थिला बोली प्रोडक्शन बढ़ुतला एठी तो प्राइस बढ़ी गला जेहेतु प्राइस बढ़ी गला हमर डिमांड कमी गला कोन हला एठी प्राइस बढ़ी गला जेहेतु प्राइस बढ़िला डिमांड कोन हला डिमांड कमी गला तो जदि डिमांड कमी जीवो जदि प्राइस बढ़ी गला फास्ट प्राइस बढ़िले डिमांड कमी जीवो तुमे किनुथिला मन कर गुपचुप खाउतलो 30 टका प्लेट रे एबे सेटा बढ़ी 100 टका हे गला आ खाइबो कमी जीवो जदि भी खाइबो कम फ्रीक्वेंसी रे खाइबो हैला डिक्रीज सो एटी एम्प्लॉयमेंट बढ़िबो ना कमिबो कोन समझते एटी एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज और डिक्रीज एटी एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज और डिक्रीज कौन हम एम्प्लॉयमेंट स्टेटस इंक्रीज और डिक्रीज ना एम्प्लॉयमेंट डिक्रीज कौन हम एटी ना एम्प्लॉयमेंट डिक्रीज करियो एम्प्लॉयमेंट स्टेटस कमी जो তাহলে ডিমান্ড পুল আর সাপ্লাই ডিমান্ড পুল আর কস্ট পুশ ভিতরে এটা কলে সপ্লাই সাইড ইনফ্লেশন ইজ কস্ট পুশ এটা সপ্লাই সাইড রে দেখিବାକୁ মিলিলা ডিমান্ড পুল কোন না দিস ইজ ডিউ টু এক্সেস মনি সপ্লাই this is due to excess money supply and demand pull inflation is due to economic growth याकु growth inflation बोली मध्य को आ जाए है money supply can also increase due to excessive expenditure money supply can be increased due to excessive expenditure now ये difference सा बुझे गला समस्त difference is clear मत लागुनी आउ कहा कुछ या भीतर डाउट थिबो बोली नेक्स्ट टॉपिक को जीवी मेजरिंग इन्फ्लेशन नाउ इन्फ्लेशन को हमें मेजर केमती करबा गुपचुप 20 टका अछि औ ठीक अछि छोटा बेले केते टका थिला केते टका रे खाइचो गुपचुप कहलो केते कम रे खाइचो टंकाटे रे केतेरा गुपचुप खाइचो टंकाटे रे केतेरा गुपचुप खाइचो एबे तो 20 टका प्लेट अछि मु टंकाटे रे 10 टा खाइछि सबटु मिनिमम कोड़े टका अच्छी कोडी कटक रे तो नहीं कटक रे 30-40 टका हे गलानी मिनिमम भुवनेश्वर रे 50 टका हे जाइथियो ना दिल्ली बॉम्बे रे 100 टका हे जाइथियो दिल्ली रे तो गोटे गुपचुप गोटे पीस गुपचुप 5 टका गुपचुप खान जान गुपचुप गोटे 2010-11 कथा कहूँ से गुपचुप गोटे दिल्ली रे 5 टका व्हेयरएज ओडिसा सेटा 20 टका रे मिलुतला प्लेट सेठी गोटे 5 टका माने 50 टका नउतले प्लेट्स माने एबे सेठी 100 टका नउतले प्लेट दिल्ली रे तोरा 35 हो ठीक अछि जहां भी आसु जो देन इंडेक्स प्राइस इंडेक्स केमती कैलकुलेट करा जाए ना करंट ईयर प्राइस डिवाइडेड बाय बेस ईयर प्राइस
divided by base year price into 100 कौन कहली into 100 this is called price index so current year price divided by base year price into 100 एटा को हमें बेस एटा को हमें प्राइस इंडेक्स बुझी गला सिंपल कथा हमें आगरु मध्य प्राइस इंडेक्स ऊपर डिस्कशन बा डिफरेंट इंडेक्स ऊपर हमें पढ़ी छे हैला नाउ इन्फ्लेशन केमति कैलकुलेट हुए ताले इन्फ्लेशन एटी कैलकुलेट केमति हुए ना इन्फ्लेशन कैलकुलेट करा जाबे डब्ल्यूपीआई सीपीआई एंड जीडीपी रिफ्लेक्टर डब्ल्यूपीआई सीपीआई कोन ना प्राइस इंडेक्स देखुचे एटी कोन देखुचे ना एटी प्राइस इंडेक्स देखुचे होलसेल प्राइस केते अछि होलसेल प्राइस अनुसार जतले हमें देखुचे एटा कोन देखुचे ना होलसेल प्राइस केते अछि तो एटी देखले हमें डब्ल्यूपीआई कंज्यूमर प्राइस अछि केते देखुचे हमें तो कहले सीपीआई जीडीपी डिफ्लेक्टर एटी देखुचे कोन ना इन्फ्लेशन देखुचे इन्फ्लेशन देखुचे एटा कहले कोन हमें जीडीपी डिफ्लेक्टर कोन मध्ये मु कहि छै आगो हैला तो डब्ल्यूपीआई रे हम देखिया मेजर चेंज कोन होलसेल मार्केट प्राइस रे दैट इज ऑन मंथली बेसिस आगु वीकली निया जाउथला एटा इट वाज फर्स्ट पब्लिश्ड इन 1942 किया आला ना बाय डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री 2012 रे असला डॉक्टर सुमित्रा चौधरी कमिटी इट वाज अपॉइंटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू रिव्यू डब्ल्यूपीआई मेथोडोलॉजी डब्ल्यूपीआई रे हुए कोन how many products are there na 697 products are there कहते ना 697 commodities are there to measure inflation but not service now base year कहा को निया जाउची एटी सबले क्वेश्चन आसे को ईयर टा को हमें बेस ईयर बोली नउची which year is called as base year कोन कहली मो क्वेश्चन होची which year is called as base year हमें बेस ईयर बोली कहा को बेस ईयर को ईयर टा को हमें कहूचे बेस ईयर नहीं मैं कौन व्हाट आर द फैक्टर्स से कहूचे से वर्ष मॉनसून डेफिसिट नथिवो लेस मॉनसून डेफिसिट हेतिवो मॉनसून डेफिसिट अधिक नथिवो नो मेजर नेचुरल कैलामिटी अधिक होई नथिवो नो इन्फ्लेशन एट अलार्मिंग रेट इन्फ्लेशन रेट अधिक नथिवो नेचुरल कैलामिटी लाइक कोविड-19 होले कोन हो कोविड ईयर को हमें बेस ईयर नहीं परिबे कि नो बिकॉज़ दे आर डेविएटिंग फ्लक्चुएटिंग ईयर्स सेठी फ्लक्चुएट होउची प्राइस अनस्टेबल ईयर्स इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी दिस इज इकोनॉमिक एक्टिविटी अनुसार अनस्टेबल मु कभी कोविड ईयर कहया तो कोन ना कोविड ईयर बेस ईयर एवं करंट ईयर भितर अधिक गैप नथिवा दरकार मु कभी 2004-5 गला पूर्व 2004-5 थिला तापर 11-12 नेले नो एबे चेंज हिची लेटेस्ट चेंज हिची करंट ईयर 2022-23 को आसी जोडा सो एठी देखुछ हम अधिक दिन रो गैप न होवा दरकार सेति पय एटा को चेंज करा जाय देखो एटी प्रोडक्ट्स कोन नियाउछ 697 कमोडिटीज वेटेज केते 2004-5 बेस ईयर वेटेज केते थिला 2011-12 रे वेटेज केते थिला तुम के पचारिबनी वेटेज केते थिला तुम खाली पचरा एटी क्वेश्चन आस पर इंक्रीज हेची ना डिक्रीज हेची ना कोन हेची एटी क्वेश्चन आस पर सो प्राइमरी आर्टिकल्स थिला 20 एटी इंक्रीज हेकी हेची 22 फ्यूल एंड पावर थिला 14 एटी हेची 13 तो डिक्रीज मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स थिला 64.97 हेची 64.23 सो डिक्रीज गोटिए फैक्टर इंक्रीज आउ दुटा फैक्टर कोन हेची ना डिक्रीज कोन बोले गोटिए फैक्टर इंक्रीज आउ दुटा फैक्टर कोन हेची ना डिक्रीज हैला सेमती सीपीआई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स ना मते कहले कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कोन कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कोन आउ होलसेल प्राइस इंडेक्स कोन what is consumer price index and what is wholesale price index
कंज्यूमर प्राइस दी प्रकार प्राइस थाए आमे जो प्रोडक्ट रिटेल रे किनी आनुचे दुकानी ठू जो प्राइस रे दैट इज कॉल्ड कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स दुकानी जो प्राइस रे किनी आनी दैट इज कॉल्ड होलसेल प्राइस इंडेक्स कौन कहले दुकानी जो प्राइस रे किनी आनिला ताको कहले होलसेल प्राइस इंडेक्स बुझिला कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कोन होलसेल प्राइस इंडेक्स कोन सो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स टा चारि प्रकार गोटेला कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर आईडब्ल्यू इंडस्ट्रियल वर्कर्स सीपीआईएल फॉर एग्रीकल्चरल लेबरर्स सीपीआईआरएल फॉर रूरल लेबरर्स सीपीआई रूरल अर्बन एंड कंबाइंड सीपीआई रूरल अर्बन एंड कंबाइंड ना बेस ईयर चेंज है देखो सीपीआई आईडब्ल्यू रे बेस ईयर चेंज है कितना 2016 रु चेंज फ्रॉम 2001 बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 2020 2001 थिला सेटा चेंज कर 2016 कला सीपीआई आईडब्ल्यू पई ना एगुडा को चेंज हेनी मन ना सीपीआई एएल पई 1986 87 सीपीआई आरएल पई 86 87 ना रूरल अर्बन कंबाइंड पई कितना 2012 ना एटा सब किए पब्लिश करे क्वेश्चन आसीबो सीपीआई आईडब्ल्यू इज बाय लेबर ब्यूरो कोडी अछि लेबर ब्यूरो शिमला इटा लेबर ब्यूरो शिमला इटा बाय लेबर ब्यूरो सीपीआई रूरल अर्बन कंबाइंड दिस इज बाय एनएसओ मु कहितले 2019 रे इटा फॉर्मेशन हेतला यार सीएसओ एवं एनएसएसओ मिसिला पर सीएसओ और एनएसएसओ मिसिला पर 2019 रे हेतला कोन ना एनएसओ बुझिला देन सीपीआई रूरल अर्बन कंबाइंड सीपीआई रूरल अर्बन कंबाइंड now rural ले 448 items are there urban ने 460 items are there base year change हला केते कोल 2010 रु 2012 एटा कोन पय यूज होना इट इज यूज्ड फॉर कंप्यूटिंग डीए so CPI is not used CPI is used not WPI DA कंप्यूटेशन पय क्वेश्चन से पचारिबो DA कंप्यूटेशन पय कहा को यूज करा दे DA कंप्यूटेशन पय यूज हुए CPI not WPI now inflation targeting for inflation targeting RBI uses CPI combined instead of WPI on use it CPI combined use हुए WPI use हुए now headline inflation is based on CPI combined now ए डाटा इंपोर्टेंट सेटा को स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पचारिबो को टाइप रो क्वेश्चन आनिबो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन से पचारिबो ए डाटा को नै देन जीडीपी डिफ्लेक्टर ना जीडीपी एट करंट प्राइस बाय जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस ऑलरेडी कहि सर करंट प्राइस रे आ गोटेला कांस्टेंट ना कांस्टेंट प्राइस रे माने बेस ईयर करंट प्राइस रे माने करंट ईयर करंट प्राइस रे माने कोन ना करंट ईयर बेस प्राइस रे हेले बेस कांस्टेंट प्राइस रे हेले दैट इज कॉल्ड बेस ईयर कोन कहले कांस्टेंट प्राइस रे हेले बेस ईयर बुझियला ये इंडेक्स गुडा सब बुझियला और न्यू सीपीआई रे हमें देखिले आसी कोन ना रूरल अर्बन एवं कंबाइंड कोन कहले रूरल अर्बन एवं कंबाइंड एठी देखिला हमें बेस ईयर केते बेस ईयर इज 2012 बेस ईयर केते ना बेस ईयर इज 2012 न्यू CPI now the next time देखियो what are the measures to tackle inflation next point देखियो हमें what are the measures to tackle inflation कोन करा जाय परियो को to tackle inflation कौन को व्हाट आर द मेजर्स ना मॉनिटरी मेजर्स हाँ आउ गोटे पॉइंट मु भूली गली कहया को यदि हमें रेट अनुसार देखिबा यदि एटा लेस देन 3% ताल ता कोजे क्रिपिंग इन्फ्लेशन लेस देन 3% हेले ता कोजे क्रिपिंग इन्फ्लेशन सेम 3 रु 10%
10 रु 20%, 20 रु 100%, मोर देन 100%, है लेस देन 3% हेले कौन कहले ताको, दैट इज कॉल्ड क्रीपिंग इन्फ्लेशन। सो 3 रु 10 रे तो कहले वॉकिंग बा ट्रॉटिंग इन्फ्लेशन, दिस इज कॉल्ड वॉकिंग इन्फ्लेशन और ट्रॉटिंग इन्फ्लेशन। 10 रु 20% जदि हुए ताले कौन कहजिवो ना रनिंग इन्फ्लेशन, कौन कहल, दैट इज कॉल्ड रनिंग इन्फ्लेशन। एटा 20 रु 100% हेले दैट इज कॉल्ड हाइपर इन्फ्लेशन। 20 रु 100 बा मोर देन 100 जा भी हो एको जे हाइपर इन्फ्लेशन और गैलोपिंग इन्फ्लेशन, हाइपर और गैलोपिंग इन्फ्लेशन कह जाय ताको ना, एटा मन रखिबे। ताले कौन कहली, लेस देन 3% हेले क्रीपिंग, 3 रु 10 हेले वॉकिंग और ट्रॉटिंग, 10 रु 20 हेले रनिंग, 20 रु 10 हेले कौन हाइपर और गैलोपिंग इन्फ्लेशन। कौन कहले 10 रु 20 रु 10 हेले 20 रु 100 हेले हाइपर और गैलोपिंग इन्फ्लेशन बोली कहले। नाउ मेथड गुडा को पढ़िबा। इन्फ्लेशन कौन जानिले, हमें इन्फ्लेशन टाइप्स जानिले, टाइप्स बेस्ड ऑन रेट ऑफ इन्फ्लेशन, दिस इज टाइप्स बेस्ड ऑन rate of inflation, types based on rate of inflation, types based on rate of inflation। है इन्फ्लेशन कौन जानले, डिफरेंट टाइप्स जानले। एबे जानिया मेजर्स टू टैकल इन्फ्लेशन, केमती केमती कौन कौन मेजर्स नहीं परिया ना। मॉनिटरी कंट्रोल, मॉनिटरी कंट्रोल ले यू कैन टॉक अबाउट क्रेडिट कंट्रोल मेथड। कौन पढ़िबा एठी ना, क्रेडिट कंट्रोल ना। क्रेडिट कंट्रोल मेथड रे सीआरआर, एसएलआर, रेपो, रिवर्स रेपो, एवरीथिंग आई हैव डिस्कस्ड इन आरबीआई क्लास। सो इट रेफर आरबीआई रिलेटेड क्लास, एटा डिस्कस करबी नेटी 2-4 दिन तळे हमें पढितले मन थिबो समस्त। आरबीआई रिलेटेड क्लास रे क्रेडिट कंट्रोल मेथड ऊपर हमें पूरा डिस्कस करते, सो एटी आउ कुछ मते डिस्कस करियार आवश्यकता नहीं। द नेक्स्ट इज फिस्कल कंट्रोल। फिस्कल कंट्रोल, फिस्कल कंट्रोल ले देखछो कोना, देयर इज रिडक्शन इन अननेसेसरी एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट रो अननेसेसरी एक्सपेंडिचर टा को हमें रिड्यूस करि परिया। कौन कहले, अननेसेसरी एक्सपेंडिचर को रिड्यूस करि परिया। इंक्रीज, अच्छा एटा क्वेश्चन आसे सबले, डायरेक्ट टैक्स को कौन करा जिवो और इनडायरेक्ट टैक्स को कौन करा जिवो। डायरेक्ट टैक्स किए ना, टैक्स लाइक योर इनकम टैक्स इज डायरेक्ट टैक्स। टैक्स कौन टाइप को टैक्स, कौन टैक्स ना, इनकम टैक्स टा को हमें कहते डायरेक्ट टैक्स। हैला यदि इनकम टैक्स बढ़ी जाए, मन कर मो इनकम थिला 100 टका, इनकम टैक्स थिला 7%, ना एबे मो इनकम 100, इनकम टैक्स बढ़ी के गेला 12%, ताले मोर डिस्पोजेबल इनकम केते ना, डिस्पोजेबल इनकम एठी थिला मो पाखरे 93 रुपीस, एठी गेला केते ना 88 रुपीस, केते गेला एठी ना, एठी गेला 88 रुपीस, एठी थिला केते ना 93 रुपीस। कोटे जगह देखले 93, एठी गेला केते ना 88। ना मो डिमांड कोड कमियो मते को 7% रे ना 13% रे 12% रे, मो डिमांड कोड कमियो। डिमांड कोड कमियो 7% रे कमिबो ना 12% रे कमि जिवो डिमांड ना, एटी डिमांड रिड्यूस हे जिवो। कोन हो ना, एटी डिमांड रिड्यूस हे जिवो। बारह परसेंट डिमांड कम, ताले इनकम टैक्स को इन्फ्लेशन समय रे बढ़ेइबा दरकार ना, डिमांड कमिले ऑटोमेटिकली इन्फ्लेशन कमिबो। डिमांड पुल इन्फ्लेशन जदि हेतिबो ताले कमि जो इन्फ्लेशन रिड्यूस, डिमांड रिड्यूस, सो इन्फ्लेशन रिड्यूस। तो क्वेश्चन होची इनकम टैक्स को बढ़ेइले इन्फ्लेशन कमिबो ना बढ़िबो, दिस इज द क्वेश्चन। इनकम टैक्स बढ़िले इन्फ्लेशन बढ़िबो ना कमिबो, एति कथा।
जल्दी कह इनकम टैक्स बढ़िले इन्फ्लेशन बढ़िबो ना कमिबो ना इनकम टैक्स बढ़िले इन्फ्लेशन कमिबो कहीं डिस्पोजेबल इनकम कमी जाउछि सो डिमांड कमिला एंड हेंस इन्फ्लेशन ना इनडायरेक्ट टैक्स कथा हम देखिबा इनडायरेक्ट टैक्स लाइक जीएसटी इनडायरेक्ट टैक्स मुझे लाइक करना लाइक जीएसटी ना 100 टंका थिला जीएसटी मन कर थिला जीएसटी रेट थिला लेट्स से 18% ताल टोटल 118 टंका दवा पड़ू ना एटी इन्फ्लेशन ऑलरेडी हेई जाइछि ताल एटी प्राइस कमेइबो ना बढ़ेइबो तुम 118 टंका माने हमको इन्फ्लेटेड प्राइस इन्फ्लेशन हेला पर केते ना 118 टंका ताल एटी प्राइस कमेइबो ना बढ़ेइबो कमेइबो प्राइस ना प्राइस जेतले इन्फ्लेटेड हेकि अछि प्राइस जेतले बढ़ी कि अछि ताको रिड्यूस करबा कोन कहली प्राइस जेतले बढ़ी कि अछि हम सेटा कोन करबा हम सेटा को रिड्यूस करबा कमेइबा ताले 18% जगह रे तुम नेला 10% ताले प्राइस केते हे गला संग संग मार्केट प्राइस जो 110 टका तो 118 रु 110 ला इन्फ्लेशन कमिला कि नहीं 118 टका प्राइस थिला मार्केट प्राइस एबे कमी कि 110 टका हे गला ताले इन्फ्लेशन कमिला कि नहीं हां कमिला कोन कहबा एठी कमिला बुझिला ताले इनडायरेक्ट टैक्स को रिड्यूस करबा डायरेक्ट टैक्स को इंक्रीज करबा ना वेरी वेरी इंपोर्टेंट पॉइंट बुझी गले मन रखियो डिक्रीज इनडायरेक्ट टैक्स इंक्रीज डायरेक्ट टैक्स कौन करो डिक्रीज indirect tax increase direct tax now budget कौन करियो ना surplus budget means expenditure is less than revenue expenditure is less than revenue next trade measures is all about export and import एठी कौन करिया एक्सपोर्ट इंपोर्ट कौन करिया मते को एक्सपोर्ट कमेइबा ना बढ़ेइबा ना इन्फ्लेशन हेची मींस प्रोडक्ट्स आर नॉट अवेलेबल कौन कहले एठी इन्फ्लेशन हेची माने प्रोडक्ट्स आर नॉट अवेलेबल export products not available so price is increasing product not available so price is increasing ताला में एटी कौन करिया एक्सपोर्ट बाहर को जिनसटा पठेइबा ना पठेइबानी बंद कर रखिबा बाहर को जिनसटा पठेइबा ना पठेइबानी बंद कर रखिबा ना बंद करिया एक्सपोर्ट रिड्यूस करिया एक्सपोर्ट रिड्यूस ना इंपोर्ट कौन करिया इंपोर्ट कौन करिया ना इंपोर्ट इंक्रीज करिया इंपोर्ट इंक्रीज करिया इंपोर्ट इंक्रीज कले कौन होबो ना एटी प्रोडक्ट गुडा को इंडिया रे अवेलेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट्स इंक्रीज हिजो इंडिया रे अवेलेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट्स इंक्रीज हिजो नेक्स्ट इज एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स administrative measures एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स रे कौन नहीं पर लीगल कंट्रोल ऑफ प्राइस जो प्राइस टा अननेसेसरली बढ़ुची ना गवर्नमेंट कैन चेक दोज प्राइस
गवर्नमेंट से प्राइस टाको चेक करी कमाई पारे बेले बेले ब्लैक मार्केटिंग होर्डिंग हवा कारणरू मध्ये प्राइस इंक्रीज होता है कोन कहली बेले बेले ब्लैक मार्केटिंग होर्डिंग हवा कारणरू मध्ये प्राइस इंक्रीज होता है सो एटी कोन करा जिवो ना प्राइस टाको रिड्यूस करा जिवो कोन कहली प्राइस को एटी रिड्यूस करा सो देयर इज लीगल कंट्रोल ऑफ प्राइस कोन कहली देयर इज लीगल कंट्रोल ऑफ प्राइस ना स्कार्स रिसोर्स रो रेशनिंग माने इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करिवो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन among all equal distribution among all increasing public service delivery reducing energy import माने बाहर जो एनर्जी टाको हम इंपोर्ट करछ सेटा को हम जब रिड्यूस करियो ऑटोमेटिकली प्राइस कंट्रोल हे जिवो कोन हबो ना ऑटोमेटिकली प्राइस कंट्रोल हे जिवो बुझियला ना दीज आर द मेजर्स दैट वी कैन टेक यदि मते डाउट रहला पचार एनी डाउट ऑन दिस यारी भीतर किछि डाउट की यारी भीतर किछि डाउट अछि मते लागुनी डाउट अछि जदी अछि पचार लास्ट गोटे कांसेप्ट कहि बुझियो मन दे एठी नेली टाइम जनवरी फेब्रुआरी मार्च एप्रिल मे जून एमती नहीं गली टाइम एठी नहीं गली परसेंटेज इंक्रीज केते 0 रु +5 +10 +15 एठी -5 -10 -15 एमती मनकर बढ़िला बढ़िला और कमिला प्राइस हैला जेतबेले प्राइस बढ़ुची आमे सेटा को कोन कहउचे ना आमे सेटा को कहउचे इन्फ्लेशन जेतबेले प्राइस कमुची आमे सेटा को कहउचे डिसइन्फ्लेशन जेतबेले प्राइस प्राइस जेतबेले नेगेटिव जाउची ता कहउचे इन्फ्लेशन ठीक उल्टा होउची डिफ्लेशन प्राइस कोन होउची यू आउट देखो नो प्रॉब्लम बुझी पारिबो तुम ऑलरेडी बहुत बड़ इंपोर्टेंट पॉइंट बुझिलानी बुझी पारिबो ना देखो मुझे कहली प्राइस बढ़िले तो कौन कहया 5 टका 10 टका 20 टका 50 टका बढ़िला इन्फ्लेशन ना गवर्नमेंट इंटरफेयर करिवो गवर्नमेंट इंटरफेयर करी प्राइस कमेइबो हठात तो 50 टका टाको कमे की 10 टका कर परिबोनी कमे की 50 रु 40 35 30 25 एमदी कमेइबो तो ए जो धीरे धीरे कमौची दैट इज कॉल्ड डिसइन्फ्लेशन कौन कहले दैट इज कॉल्ड डिसइन्फ्लेशन बुझिला ना डिफ्लेशन कौन ना तो प्राइस टा रिड्यूस होउची इन्फ्लेशन पर हमें तो कहउचे डिफ्लेशन कौन कहले प्राइस टा तो रिड्यूस होउची हमें तो कहउचे डिफ्लेशन तो प्राइस रिड्यूस हैला परे गवर्नमेंट रो काम कौन दिस इज अ लॉस टू कहार दिस इज अ लॉस टू दी सप्लायर तो गवर्नमेंट एटी इंटरफेयर करके प्राइस टा को बढ़ेइबो दैट इज कॉल्ड रिफ्लेशन गवर्नमेंट कौन करू ना गवर्नमेंट एटी इंटरफेयर करके प्राइस टा को बढ़ेइबो तो बढ़ेइबो गवर्नमेंट प्राइस को इंटरफेयर करके ताको कहै जे रिफ्लेशन नाउ क्लियर व्हाट इज रिफ्लेशन चारिटा कथा कहली इन्फ्लेशन ता उल्टा डिफ्लेशन इन्फ्लेशन ने प्राइस हाइक हुए डिफ्लेशन ने प्राइस कम हुए सो इन्फ्लेशन को धीरे धीरे कमेवा को कहले डिसइन्फ्लेशन आउ धीरे धीरे डिफ्लेशन टा को इंक्रीज करबा को प्राइस टा को बढ़ेबा कहला रिफ्लेशन चारटा कथा कहली तल चारिटा कथा बुझी गला ना डाउट आई होप एवरीथिंग इज क्लियर समस्त बुझिले ताले इन्फ्लेशन टॉपिक ऊपर क्वेश्चन आसिले किछि भी टाइप रो करि परिबो ना नाही इन्फ्लेशन ऊपर को भी टाइप रो क्वेश्चन आसिले करि हबो कि नाही एबे को मते हां करि हबो अच्छा आ गोटे कांसेप्ट कहूछि
एठी नबा रेट ऑफ इन्फ्लेशन, एठी नबा रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, एठी नबा कौन ना रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। ये देखा ये भाया गोटे कर्व आसो, रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन ने ये भाया गोटे कर्व आसो। देखो ये कौन हो रेट ऑफ इन्फ्लेशन, एटी एटा कौन रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हो केतेबेले ना देखो रेट ऑफ इन्फ्लेशन टा डिक्रीज हो, तो उल्टा रिलेशन इनवर्स रिलेशन इज देयर, रेट ऑफ इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट। इन्फ्लेशन रो रेट टा बढ़िले अनएम्प्लॉयमेंट टा रिड्यूस होउची हैला, इनवर्स रिलेशनशिप, it shows inverse relationship, and this curve is known as Phillips curve। ये कर्व ना कौन फिलिप्स कर्व, कौन यार ना ये कर्व ना है फिलिप्स कर्व। ओवर एतिकेला इन्फ्लेशन डिफ्लेशन ने हमर बुझिवा दरकार, या बाद आउ किछि बुझिवार आवश्यकता नाही, एतिक बुझिले पाठ हो जिवो। एतिक बुझिले जति क्वेश्चन आसीबो हमें करि परिया। म जदि डाउट रहिला किछि पचार, एनी डाउट जति तले कोन पढिला आजिर क्लास रे मते को, कोन सिखिला आजिर क्लास रे? तले कोन देखिले आजिर क्लास रु? इन्फ्लेशन, मीनिंग टाइप, इन्फ्लेशन ने देखिले हम कोन मीनिंग आउ टाइप, सॉल्यूशन, फिलिप्स कर्व, फिलिप्स कर्व, एति पाठ हम पढले। ठीक अछि, चलो सो दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन। आउ जहा जे पुणी डिस्कस करियो हमें आसंदा काली, काली आउ किछि टॉपिक आनी आसीबे हम डिस्कस करियो। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन। गुड नाइट। नेक्स्ट क्लास समस्त पढ़ी के आसी।